Hello, dear children. In the last lecture of electrostatics, we have studied about an electric dipole. तो सबसे पहले फिर से एक बार डाइपोल का मीनिंग डिसाइड करते हैं. डाई मीन्स टू, पोल मीन्स polarities. तो suppose one charge is +5 coulomb and another charge is -3 coulomb. Because the magnitude of both charges are not same, so therefore this combination is not called as dipole. ये सबसे important concept है. But suppose one charge is +5 coulomb and another charge is -5 coulomb. So exactly this is a system containing dipole. So it means dipole में आपके पास two equal charges होने चाहिए. So I have indicated both the charges by Q, but they should be opposite. Like if one charge is positive, another charge is negative. Certainly the length between the dipole means ये जो length जिससे हम दोनों charges को connect करेंगे, this will be shown by 2a, or in some books the symbol taken is 2l, और इसके सेंटर को आपने इंडिकेट किया O से. So half the dipole length will be indicated by A. तो जब भी आप लेंथ और डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, so you can note this point out. Distances are always measured from center of dipole. ठीक है, तो आपने 2a और 2l को बोल दिया. This is dipole length. नेक्स्ट कंसेप्ट लिया था हम लोगों ने. What is the axis of the dipole? सो द लाइन, सबसे पहले आपने जब इस लाइन को डायरेक्टली ज्वाइन किया, द लाइन पासिंग थ्रू द टू चार्जेस as well as through the center of the dipole, या फिर आपने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया इन दिस वे. So this is called as the axis of dipole, or it is also called as axial line. Next term was the equator. So the perpendicular line which is passing through the center of the dipole. इस तरह से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की और इसको भी एक्सटेंड कर दिया. So this perpendicular line which is passing through the center of the dipole and perpendicular to the axis is called as equator. नेक्स्ट पॉइंट लिया था हम लोगों ने. सिंस द टोटल चार्ज ऑफ द डाइपोल इज जीरो, बिकॉज जब भी आप +5 कूलम -5 कूलम या +q -q को एल्जेब्राइकली ऐड करेंगे, तो यू आर गोइंग टू गेट द टोटल चार्ज एज जीरो. But it doesn't mean that the electric field produced by the dipole is zero. So in the next topic, we have to calculate the electric field in two conditions. First is on the axial line, means is green color की line पर हम एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे. एंड सेकेंड कंडीशन, वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन, मीन्स ऑन दिस पर्पल लाइन we will be calculating the electric field due to the combined effect of electric dipole. So let's see first. To calculate the electric intensity, make a question. Derive an expression for electric intensity at a point due to an electric dipole. So there are two cases. On the axis of the dipole. Second, on the equator of the dipole. So, right, first question is calculate electric field at a point on the
एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। तो सबसे पहले हम एक डाइपोल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो ऑब्वियसली सपोज इसी फिगर को रिप्रोड्यूस करती हूँ मैं। डाइपोल मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो हम लोगों ने एक चार्ज लिया हुआ है प्लस क्यू एंड द सेकेंड चार्ज इज टेकन एज माइनस क्यू एंड दिस इज अ लाइन कॉल्ड एज एक्सिस। आपने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया तो इस पूरी लाइन को आपने बोल दिया एक्सिस। अब इस लाइन पर एक पॉइंट कंसीडर किया हम लोगों ने P at which we have to find the electric field intensity। ठीक है। अब जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां आप एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट बी एज्यूम अ टेस्ट चार्ज। सपोज टेस्ट चार्ज इज यूनिट एज वेल एज पॉजिटिव। तो एक टेस्ट चार्ज का सिंबल लिया हम लोगों ने प्लस क्यू जीरो और उसको हम लोगों ने जस्ट एज्यूम किया हुआ है दैट इट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट P। अब P पर कंबाइंड इफेक्ट मिलेगा आपको मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एज वेल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। सो because ये दोनों चार्जेस प्लस क्यू जीरो एंड प्लस क्यू ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स will be feeling an electric field intensity in this direction। इस तरह से because ये जो प्लस क्यू है वो प्लस क्यू जीरो को अपने से दूर रिपल करेगा। तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू मिलता है उसका डायरेक्शन मिलेगा अवे फ्रॉम प्लस क्यू। बट since this minus q will attract this plus q zero, hence the direction of electric field intensity due to minus q charge will be towards minus q। और एक कंसेप्ट को आप रिवाइज कर लेंगे, पोनी means due to positive charge electric field intensity is outward, whereas due to negative charge electric field intensity or line is inward। Now, take the data. This is the distance between two equal and opposite charges, and this is the center of the dipole. This is O. As all the distances are measured from the center of the dipole, so हम यहाँ से P point का distance measure करेंगे and let this distance is R। ठीक है, सेंटर से आपने मेजर कर लिया। अब सबसे पहले आपको फाइंड करना है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो सिंपल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। आप क्यू चार्ज से डिस्टेंस लेते हैं इन एयर एंड इन एस आई सिस्टम। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट into we are taking electric field due to plus q charge, so this is q। अब Q से प्लस Q से आप P तक का डिस्टेंस चेक करो। प्लस Q से P तक का डिस्टेंस है आपके पास इंडिकेटेड येलो मार्क। सो दिस इज इक्वल टू R minus A। Got it? Check it again। Since this is A, ठीक, आपको P से Q तक का डिस्टेंस लेना है तो आप ले लेंगे R minus A। This distance is PQ। So we have got the formula as Q upon R minus A bracket square, and we are taking a unit vector P cap which is along E plus Q। तो E plus Q का डायरेक्शन है अवे फ्रॉम P। Next we are taking electric field at P due to minus Q charge। Now apply same formula 1/4 pi epsilon 0 into Q upon, now the distance between P and minus Q
means this much distance will be equal to, you can check it again, this is r plus this distance is a. So this total is r plus a bracket square into p cap. Got it? Now this p cap is directed towards, आप E minus Q का direction check करो, it is directed towards minus Q. So check the directions of E plus Q and E minus Q. They are exactly by opposite arrows. दोनों का directions एक दूसरे से opposite है. So let these equations are termed as equation 1 and 2. Note down the directions of unit vector in both the cases. So because as they are in opposite directions, therefore we can take the total electric field, जो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बिकॉज जब दो वेक्टर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो आप नेट कैसे निकालते हैं? द रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दिस इज टू a into b into cos 180 degree. Since cos 180 degree is minus 1, so we get under root of a square plus b square minus 2ab. So this will be total a vector minus b vector. तो यहाँ भी हम लोग बोलेंगे e net का आंसर आएगा आपके पास, आप चेक कर लो कौन सी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा है. सिंस r minus a distance is less, compare equation 1 and 2. r minus a distance is less, therefore electric field due to plus q will be greater. So we are writing electric field due to plus q minus electric field due to minus q, because due to both opposite directions. So now we are putting the values 1 upon 4 pi epsilon 0 into q. This is common inside the bracket 1 upon r minus a bracket square minus 1 upon r plus a bracket square. Now we will be solving this. 1 upon 4 pi epsilon 0 into q r plus a bracket square minus r minus a bracket square divided by r minus a into r plus a will be r square minus a square whole square. Now we will be solving this bracket term. So E net equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into q. Expand each term. So this is r square plus a square plus 2ra minus bracket r square plus a square minus 2ra upon आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें से कट करें. व्हाट कैन बी कट आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, a square minus a square, and this minus into minus will be plus. So we can get the net answer for electric field intensity is 1 upon 4 pi epsilon 0 into q into 4 r a upon r square minus a square whole square. अब इसमें थोड़ा सा आप कंबाइन करेंगे. Like this 4RA can be written as the product of 2R into 2A, because 2 2s are 4. So we get E net equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q into 2A into 2R divided by R square minus A square whole square. Now check the definition of electric dipole moment. Recall P. Electric dipole moment को हम लोग show करते थे P से, and this was equal to the product of magnitude of either charge
into dipole length and its direction was from minus q to plus q. तो आप इस q into 2a को पुट कर देते हैं p. So we get electric field intensity on the axis of a dipole is 1 upon 4 pi epsilon 0 into P into 2R divided by R square minus A square whole square. तो बेटर वे में इसको हम लिख सकते हैं the net electric field on the axis of a dipole is 1 upon 4 pi epsilon 0 to PR, where P is the dipole moment Q into 2A divided by R square minus A square whole square. Got it? And because we are getting plus sign over here, so the direction of this electric field is along the direction of dipole moment. So this electric field is also directed from minus q to plus q. Now, as a special case, you may be asked what happens. This is a special case. What happens if the distance of the point from the center of dipole is much larger than the half dipole length? So in this case, you will be neglecting this quantity a square because अगर a छोटा है तो ए स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर के कंपैरिजन में. तो जब भी आप आर स्क्वायर एंड ए स्क्वायर लेंगे तो आप ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे. सो वी कैन टेक द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड on the axial line in the case of a short dipole because यहाँ आप dipole half length को neglect कर रहे हैं. So this is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into 2 pr divided by r raised to 4. Because check करो ये derivation expression आपने इसमें जब r square minus a square लिया हुआ है तो r square के कंपैरिजन में a square को नेग्लेक्ट कर दिया. So this r square का भी square हो जाएगा आपके पास r raised to 4. Hence we have taken as r raised to 4. Now one r will cancel, one power of r will cancel and we get the net electric field on the axial line of a short dipole as 1 upon 4 pi epsilon 0 into 2p divided by rq. So just remember this factor that electric field intensity on the axis of a dipole where the dipole is short means dipole length is very small is directly proportional to the dipole moment but inversely proportional to the cube of the distance of that particular point from the center of the dipole. So just make a box on this important relationship. Otherwise, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का डिस्कशन होता है तो आप उसका रिलेशन लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. But in the case of a dipole, electric field intensity does not obey the principle of inverse square law. But dimensionally, it is always fulfilled because as we take in place of P, Q into 2A, तो डायमेंशनली लेंथ एंड लेंथ कट हो जाएंगे बट डायरेक्टली आपको यहाँ दिख रहा है कि electric field intensity due to a short dipole on the axial point is directly proportional to dipole moment and inversely proportional to cube of the distance between it. Now we have to calculate the electric field intensity
due to an electric dipole when the point lies on the equatorial plane. तो सबसे पहले आप एक dipole consider करेंगे. So dipole means two equal and opposite charges. So this is minus q charge and another opposite charge but equal is plus q charge. और इसके बीच की dipole length हम लोगों ने assume की 2l but in NCERT it is given as 2a. Now this angle is theta. ठीक, because आपको जिस पॉइंट पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सबसे पहले तो आप इक्वेटर ड्रॉ कर लो. दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटर दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है. सबसे पहली कंडीशन कि वो सेंटर ऑफ द डायपोल से पास होगा. तो चेक कर लो, दिस इज द सेंटर ऑफ डायपोल एंड इक्वेटर उससे पास हो रहा है. और सेकेंड कंडीशन है इक्वेटर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. सो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन को आप बोलते हैं एक्सिस. अब जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, लेट्स एज्यूम दैट पॉइंट इज पी. सबसे पहला काम पी पर प्लेस करते हैं आप एक टेस्ट चार्ज. Now, two characteristics of test charge is first it is unit and second it is positive. तो हम assume कर लेते हैं एक टेस्ट चार्ज Q0 जो कि P पॉइंट पर रखा है. अब आप फिगर में सिर्फ A P पर फोकस करें बच्चों. ए पी पर फोकस करें. ए पर रखा हुआ है माइनस क्यू एंड पी पर एज्यूम किया है क्यू जीरो. तो दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स एक्ट होगा. और अगर आप दूसरा कंसेप्ट लेते हैं कि द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस इनवर्ड, so we can mention the direction of EA as along PA. So check this, EA का डायरेक्शन हम दे सकते हैं along PA. Now what will be the formula for EA in air in SI system? 1 upon 4 pi epsilon 0. अब यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस कर रहे हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, क्योंकि माइनस क्यू एक पॉइंट चार्ज है तो माइनस क्यू अपने कारण पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा उसका एक्सप्रेशन आप पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग लेंगे. सो दिस इज क्यू डिवाइडेड बाय distance between minus q and p point is AP but its square because electric field intensity due to a point charge obeys inverse square law. और इसका डायरेक्शन चेक कर लो आप. its direction is along the unit vector PA. Got it? Now put the values of AP square. For this we can assume the right triangle. Check this, right triangle PAC assume कर सकते हैं because this is 90 degree at C angle. So we may apply Pythagoras theorem. So AP square equal to AC square plus CP square. Now check, AC is L, so this is L square plus CP is R because always the distance is measured from the center of the dipole. तो dipole के center C से आपने point P का distance assume किया है R. So this is plus R square. So we can put this value of AP square over here. So we get the answer for EA is 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon L square plus R square into unit vector along PA. This is equation number 1. Now we will be finding the electric field intensity at point P due to charge present at B, मतलब plus Q के कारण. अब फिर से आप फिगर पर बैक चाहिए. प्लस क्यू एंड पी पर भी हम लोगों ने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया हुआ है
तो पहला कंसेप्ट कि प्लस क्यू इस क्यू जीरो को अपने से दूर रिपल करेगा बिकॉज बोथ आर लाइक चार्जेस। तो फोर्स का डायरेक्शन होगा अलोंग बी पी ड्यू टू कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स। बट अगर आप दूसरा कंसेप्ट लेकर चलते हैं, सेकेंड कंसेप्ट इज पोनिंग, मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज आउटवर्ड। तो इस प्लस क्यू से लाइन बाहर की तरफ जाएगी। सो दिस इज द डायरेक्शन फॉर ई बी, जिसको आप फिगर के एक्सटेंडेड पार्ट में चेक करेंगे। तो ई बी इज शोन इन द कंटिन्यूइंग डायरेक्शन बिकॉज हमें शो करना है कि पी से दो को इनिशियल वेक्टर स्टार्ट होते हैं विच आर ई ए एंड ई बी। क्योंकि जब भी आप रिजल्टेंट निकालते हैं तो इधर आप पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए दोनों वेक्टर्स को इनिशियल लेते हैं या फिर को टर्मिनस। तो हम लोगों ने चेक करेंगे ई ए को, जिसका डायरेक्शन इस तरह से शो किया, उसको कंटिन्यू करते करते सॉरी ई बी को इस तरह से हम लोगों ने ई बी को शो कर दिया इन द सेम डायरेक्शन दिस वेक्टर इज कंटिन्यूड। एंड पी पॉइंट से अब हमें ऐसा फील होता है कि ई ए और ई बी को इनिशियल वेक्टर्स हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे द आंसर फॉर ई बी। सो चेक दिस, डिस्टेंसेस चेक करेंगे सबसे पहले आप। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, चार्ज का साइन पुट नहीं करते हैं आप, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है आपके पास बी पी का स्क्वायर एंड द डायरेक्शन इज अलोंग बी पी यूनिट वेक्टर। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, चेक अगेन राइट ट्राइंगल बी पी सी, राइट ट्राइंगल में आप फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो वी में हैव बी पी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। सो वैल्यूज पुट की, so we get bp square equal to l square plus r square. So just put this value in the electric field intensity due to the charge at B. So this is 1/4 pi epsilon 0 into q upon l square plus r square. And this is along the unit vector BP, so it is electric field due to the charge at B. This is equation number 2. Now we will be checking next vector diagram for the consideration of finding the resultant. तो अब हम लोग वापस चलते हैं मेन फिगर में। इस फिगर में आप चेक करें द डायरेक्शन ऑफ ई ए एंड दैट ऑफ ई बी इज शोन को इनिशियल फ्रॉम द पॉइंट पी। तो डायरेक्टली आप ये दोनों वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज उनके डायरेक्शंस अलग अलग हैं। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ईदर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स और आपको ये दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। सो चेक नेक्स्ट फिगर। सबसे पहले आपने डायरेक्शन लिया, ई ए का डायरेक्शन लिया हुआ है हम लोगों ने पी से अवे, और ई बी का डायरेक्शन भी लिया हुआ है पी से अवे। सो जैसे ही आपने ई ए के दो कंपोनेंट्स निकाले, check two components. First component is EA cos theta and second component is EA sin theta. This is the second component. ठीक वैसे ही हमने EB के दो components निकाले। फर्स्ट कंपोनेंट है EB का EB cos theta and second component is EB sin theta. Now check from equations 1 and 2 the magnitudes of EA and EB are equal. तो जब आप ये दो वेक्टर्स को चेक करते हैं EA sin theta and EB sin theta, their directions are exactly opposite and their magnitudes will be equal. Hence we can check that these two vectors cancel each other. ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। सो यू मे राइट अ नोट
EA sin theta and EB sin theta cancel each other because they are equal and opposite. But check these two vectors EA cos theta and EB cos theta both are in the same direction. हम लोगों ने उनको ऐसे शो किया हुआ है दोनों सेम डायरेक्शंस में हैं तो हम लोगों ने दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया सो वी गेट ई ए cos theta and EB cos theta are in the same direction. So when two vectors are in the same direction, we add them. So what we get as the net electric field intensity at an equatorial point, this is equal to EA cos theta प्लस ई बी कॉस थीटा बिकॉज चेक करो दोनों का डायरेक्शन सेम लाइन के अलोंग है तो आप आंसर लेंगे अब ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड फिर से सेम है तो आप इसको भी पुट कर सकते हैं ई ए सो दिस इज ई ए cos theta plus E A cos theta. Hence we get the final answer as 2 EA cos theta. Now put the value of EA. This is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q upon L square plus R square. अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है cos थीटा की तो फिर से आप ये कोई भी एक राइट ट्राइंगल ले लेंगे कोई भी एक राइट ट्राइंगल सो दिस इज पॉइंट P दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस था L हाफ द डाइपोल लेंथ इज L and this is theta. So this is by Pythagoras theorem under root of r square plus L square. So we may have the value of cos theta as base that is the adjacent side BC upon hypotenuse which is BP. So we can put the value of cos theta as BC की वैल्यू है L और BP की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर तो इसको आप पुट कर देंगे रिक्वायर्ड पोजीशन में सो वी हैव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P, which is an equatorial point, is 2 into 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q upon L square plus R square और cos थीटा के प्लेस पर L upon अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अब डिनोमिनेटर में आप टोटल पावर्स चेक करेंगे सो दिस इज 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की टोटल पावर हो जाएगी 3/2 इसको भी मैं थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको since x into under root of x is x into x raised to half so इसकी power है 1 so when the base is same powers are added so this becomes x raised to 1 plus half so it is x raised to 3 by 2 so we get this final power as 3/2 अब फिर से आप कॉम्बिनेशन ले लें इसको Q इंटू टू एल को हम पुट कर सकते हैं द डाइपोल मोमेंट P सो दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू टू एल के प्लेस पर डाइपोल मोमेंट where the direction goes from minus q to plus q ये सब ओल्ड पॉइंट्स को इसमें कंबाइन करते जाएंगे अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 अब आप चेक करो फिगर ये जो हम लोगों ने मेन फिगर थोड़ा सा ही ट्रांसलेटेड लिया है कि द डायरेक्शन ऑफ नेट ई कॉस थीटा वेक्टर्स विल बी गोइंग अवे फ्रॉम पी इन द लेफ्ट साइड ठीक है सो सिमिलरली आप यहाँ पर इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर ले सकते हैं from away from P in the left direction
but the direction of dipole moment is always from minus q to plus q. Therefore, the direction of electric field vector and that of dipole moment are exactly opposite to each other. So dipole moment के expression और electric field के expression में आपके पास connection आ जाएगा minus sign का. ठीक है, अब लिया आपने if the dipole is short. So what is the meaning of short dipole? Such that the distance r is much larger than the half dipole length. So again यहाँ square का relationship आ रहा है. So r square will be much larger than l square. Hence we may neglect this. We may neglect this L square term. So the net electric field intensity at an equatorial point due to a short dipole. क्योंकि दो कंडीशंस हैं, ये जनरल फॉर्मूला निकाला आपने और ये शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला निकाला. दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपॉन एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया. सो दिस इज आर स्क्वायर की पावर 3/2. अब पावर्स चेक करें केयरफुली. 2/2 will cancel, so we will get the electric field intensity at an equatorial point due to a short dipole is equal to 1/4 pi epsilon 0 into p divided by r cube, and minus sign obviously because we have seen the fact that electric field का direction इस तरह से था and dipole moment का direction इससे opposite था. So although both are not similar vectors but they are connected in this expression. तो आपके पास आ जाएगा यहाँ minus sign. Now, you may write next question. Write new question. State expression for electric field intensity at an axial point and at an equatorial point due to a short electric dipole and then deduce relation. मीन्स उनके बीच में क्या रिलेशन है वो प्रूव करना है. और you have to prove that E axis is equal to twice of E equator. This is very important relationship due to a short dipole where the, you may write, where the, in both the question, distance of axial point and that of an equatorial point from the center of dipole is equal. ठीक है, ये आपके पास मेन बात है. तो इसका हम लोग पहले एक फिगर बना लेते हैं. सबसे पहले आपने एक डाइपोल लिया मीन्स माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. अब जैसे ही आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, दिस इज द डाइपोल लेंथ, एक्सटेंड कर दिया तो इसको हमने बोल दिया एक्सिस. नाउ वी हैव ड्रॉन इट्स सेंटर, सो लेट्स इट्स सेंटर इज सी. सो अब आपने बनाया इक्वेटर. इस लाइन को आपने लिया और इसको बोल दिया इक्वेटर और इसको भी आपने एक्सटेंड कर दिया. अब एक पॉइंट आप एज्यूम कर रहे हैं एक्सिस पर. सो लेट अ पॉइंट assumed as P. The distance from the center of the dipole is R. So this is an axial point and let this point assumed as N. This is an equatorial point. इसका distance भी जब हम center से लेंगे, so because it is given that distances of axial and equatorial point
from the center of dipole is equal. तो सेंटर से इस पॉइंट का भी डिस्टेंस आपको लेना है r, ठीक। बट अब जब आपके पास में ये पूरे डाइपोल कंबाइंड सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर हम P पॉइंट पर लेंगे, because P point is an axial point, so therefore we take EP equals to axial point is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into 2p divided by r cube. This is equation number 1. It is just in accordance with the derivation done in question number 1. Now, electric field at point N, where point N is an equatorial point. This is 1 upon 4 pi epsilon 0 into P, where in both the cases this P is electric dipole moment. क्योंकि आप बच्चों को सिंबल से कंफ्यूज होने की आदत है, तो ये ध्यान रखेंगे डाइपोल मूवमेंट है विच इज इक्वल टू q into the dipole length. तो assume the dipole length taken here is 2l. So this p is q into 2l और इसका SI यूनिट होता है कूलम मीटर divided by r cube. This is equation number 2. अब आप equation 1 को divide करेंगे equation 2 से, provided we are considering the conditions for short dipole. So we get E axial upon E equatorial. So all will cancel. This is 1 upon 4 pi epsilon 0, 2p upon r cube upon 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r cube. So all will cancel. Then p upon r cube cancel and we get the answer as 2. Therefore, the electric field intensity at an axial point is twice of, this is equatorial, twice of electric field intensity at an equatorial point. So let's take a small numerical for this. If electric field intensity at an axial point due to an electric dipole at 2 meter from center of dipole is 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये आपको डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस अगर मेंशन नहीं है तो भी आपको सेंटर से ही लेना है। एंड दिस इज द आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो फाइंड E equatorial means इक्वेटर पर सिचुएटेड सेम डिस्टेंस का पॉइंट है एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। तो सबसे पहले तो बेटा चेक कर लेंगे कि क्वेश्चन में क्या डिस्टेंसेस सेम है। तो यस, इन दिस क्वेश्चन डिस्टेंसेस आर सेम, सो यू मे अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला एज E axial equal to 2 into E equator. So put this 5 Newton per coulomb is 2 into E equator. So we get E equator as 5 by 2, it means 2.5 न्यूटन पर कूलम। और रिवर्स वे में अगर आपको E इक्वेटर का आंसर गिवन है तो आप निकाल सकते हैं E एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल्स को इजीली रिलेशनशिप लगा के कर सकते हैं, प्रोवाइडेड शॉर्ट डाइपोल इज गिवन। इस रिलेशनशिप को आप जनरल वे में अडॉप्ट नहीं कर सकते। जब भी आपको जनरल डाइपोल का इक्वेशन गिवन है तो आपको शॉर्ट डाइपोल एज्यूम नहीं करना है अनलेस फर्दर डिटेल्स आर गिवन टू यू। Now you may take screenshot of some numericals based on electric dipole. So check in question number 1
you have to calculate the electric intensity on the axis of the dipole. So what formula we take when we are given the dipole moment? So we can take E axis equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into 2p divided by r cube, where the distance is also